ગુજરાત એટીએસે કચ્છમાં એક મોટું ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું, જેમાં પાકિસ્તાનની ગુપ્તચર એજન્સી આઈએસઆઈ માટે જાસૂસી કરતા એક વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે. ગુજરાતના કચ્છ સરહદી વિસ્તારમાંથી જાસૂસને દબોચી લીધો હતો. આ આરોપી ગુજરાતના વિવિધ સ્થળોની ગુપ્ત માહિતી એકઠી કરી પાકિસ્તાનને મોકલતો હતો. એટીએસ દ્વારા દબોચવામાં આવેલ શખ્સનું નામ સહદેવ ગોહિલ છે અને તે મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર તરીકે ફરજ બજાવતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. મહત્વનું છે કે આરોપી કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત નોકરી કરતો હતો અને તે નેવી સાથે બીએસએફની ગુપ્ત માહિતી પાકિસ્તાની એજન્ટને મોકલતો હોવાનું સામે આવ્યું છે. એટીએસની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે સહદેવે નવા બાંધકામ વિસ્તારોના ફોટા અને વિગતો એક પાકિસ્તાની મહિલા એજન્ટ જે અદિતિ ભારદ્વાજ નામથી ઓળખાય છે તેને વોટ્સએપ દ્વારા મોકલી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે જાન્યુઆરી 2025માં સહદેવસિંહ દ્વારા પોતાના આધાર કાર્ડથી પોતાના નામનું સિમ કાર્ડ ખરીદ્યું હતું. ફેબ્રુઆરી મહિનામાં પાકિસ્તાની એજન્ટને તે નંબર પર વોટ્સએપ ચાલુ કરવા ઓટીપી આપી શરૂ કરાવ્યું હતું, જે નંબર પર સહદેવસિંહ બીએસએફ અને નેવીના ફોટો વિડીયો તેમજ નવા બાંધકામની માહિતી મોકલતો હતો. હાલ એટીએસ દ્વારા સહદેવસિંહના મોબાઈલને એફએસએલ ખાતે મોકલી વધુ વિગતો મેળવવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. गुजरात एटीएस द्वारा प्रोएक्टिवली पोलिसिंग में एक खूब ज महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करी है. गुजरात पुलिस द्वारा कच्छ जिल्ला में एक पाकिस्तानी जासूस ने पकड़वामां आव्या है. खास करीने आ कच्छना नागरिक है. कच्छना आ नागरिक द्वारा पाकिस्तान एक महिला जोड़े क्यांक ने क्यांक हनी ट्रेप में फसाया होय एवी प्राथमिक जानकारी हमणां प्राप्त थई है. आ व्यक्ति द्वारा पाकिस्तान आ महिला ने खास करीने आपड़ा खूब ज महत्वपूर्ण नेवी तेमज बीएसएफ ना जे अलग अलग एस्टाब्लिशमेंट है तेनी माहिती तेना फोटाओ पहोंचाडवानो प्रयास करवामां आव्यो हतो. आ व्यक्ति द्वारा पोताना नामे भारत में सिम कार्ड खरीदवामां आव्યું, જેનું વોટ્સએપનું એક્સેસ એ પાકિસ્તાની મહિલાને આપ્યું હતું. તેમજ જે પ્રાથમિક પુરાવા પ્રાપ્ત થયા છે તેમાં પાકિસ્તાની મહિલા દ્વારા આ વ્યક્તિને રૂપિયા બી મોકલવામાં આવ્યા છે. આને સંપૂર્ણ તહેકીકાત ચાલી રહી છે. આ જાસૂસને સંપૂર્ણ રીતે કડકમાં કડક કાર્યવાહી અને બીજી ડિટેલ્ડ માહિતીઓ एटीएस द्वारा प्राप्त थई रही है. વધુ माहिती एटीएस द्वारा आप सौने आपवामां आवशे. 1 मार्च को प्राथमिक तपास के लिए एक्यूज्ड को यहाँ बुलाया गया था 1 मई को. उस दौरान हमको ये पता चला कि 2023 जून जुलाई उस दौरान अदिति भारद्वाज करके एक नाम की लड़की व्हाट्सएप माध्यम से सहदेव सिंह गोहिल को संपर्क में आया था. बातचीत बढ़ी है. उसके बाद उन दोनों की बातों में ये पता चला, उन्होंने क्लियर किया, इसको कॉन्फिडेंस में लेके इसको पता चला कि पाकिस्तानी एजेंट थी. उसके बाद कुछ उनके एरिया में जो सीक्रेट जो क्या बोलते हैं बीएसएफ एंड इंडियन नेवी का जो भी गुप्त कंस्ट्रक्शंस है और अंडर कंस्ट्रक्शन एज वेल एज जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड एरियाज है उसका फोटोज़ और वीडियोस मांगी थी. उसके दौरान 2023 जुलाई एंड 2023 एंड से इसने उस व्हाट्सएप माध्यम से उसका वीडियोस एज वेल एज फोटोज़ उसको शेयर करना शुरू किया था. उस दौरान 2025 बिगिनिंग में सहदेव गोहिल ने उसने खुद के आधार कार्ड से एक सिम लिया था और उस सिम से एक व्हाट्सएप एक्टिवेट करके ओटीपी के थ्रू अदिति भारद्वाज को दिया गया था. उसी नंबर पे उसके बाद से जितने भी बीएसएफ और इंडियन नेवी का जो सीक्रेट कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स है वो सारा उसको शेयर करते थे. और उस अराउंड उसी दौरान ने एक आदमी ने इनको 40,000 का रोकड़ भी इसको पहुंचा गया था. उसी दौरान इसको ध्यान में लेते हुए इसके फ़ोन को हमने एफएसएल को भेजा गया था. उसका एनालिसिस करके हमको पता चला जो भी व्हाट्सएप जो अदिति भारद्वाज नाम से यूज़ करते थे, जो दूसरे नंबर एज वेल एज जो पहले नंबर था वो दोनों पाकिस्तान से यूज़ किया गया था. इसी दौरान ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको क्लियरली मेंशन करता है कि एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी अगेंस्ट इंडिया के तौर पे होता है. तो इस
उसके विरुद्ध में हमने सेक्शन इसके और अदिति भरद्वाज जो पाकिस्तान पीआईओ है, तो उसके विरुद्ध में हमने सेक्शन 61 एज वेल एज सेक्शन 148 भारतीय न्याय संहिता के दौरान उसको अगेंस्ट केस दाखिल किया है करके सरदेव सिंह दीपूबा गोहिल को अरेस्ट किया गया।